सो वेलकम टू महाविद्या। आज जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन अच्छी एथिक्स केस स्टडी ऊपर आज आम डिस्कशन करवा। तो एथिक्स केस स्टडी साधारणतः भाव में कौन रिक्वायरमेंट अच्छी कौन डिमांड अच्छी क्वेश्चन को एंगल को फिलोसफी एक्चुअली क्वेश्चन पचरा जाए ता सहित पिला पाखर जो एग्जामिनर अच्छे से कौन माइंडसेट जानापी चाहे से पॉइंट ऑफ आज आम डिस्कशन करवा। देखो यूजुअली जदि मुझे कहबी क्वेश्चन को आम सपोज गोटे केस स्टडी अच्छी क्वेश्चन देला कौन what steps and action he should take to handle the situations, okay, and examine the various options. तो यूजुअली जदि हमें देखिबा केस स्टडी रो आंसर को आसीबा पई बाय क्वेश्चन को आसीबा पई तार गोटे पर्टिकुलर अप्रोच अछि। सेति पई हमें जे देखिबा ना केस स्टडी दीटा अप्रोच रे बिलीव करे। गोटे होची कोन ना प्रथमतः होची हाउ we have to reach the question, how we have to reach the question, okay. Second, we have to address the question, we have to address the question, okay. जमिति मु वर्तमान कहले व्हाट स्टेप्स एंड एक्शन ही शुड टेक द हैंडल द सिचुएशंस एंड एग्जामिन द वेरियस ऑप्शंस। तो जो प्रश्न अछि जो क्वेश्चन अछि क्वेश्चन को आसीबा पई हेले जो पेरिफेरी दरकार जो स्केलेटन दरकार से स्केलेटन को हमें कोन कोनती ना कंपोनेंट ऑफ द केस स्टडी बोली कोनती कंपोनेंट ऑफ केस स्टडी। डन। तो कौन सी भी केस स्टडी 5टा रु 6टा कंपोनेंट ऊपर बेस करे। तो फर्स्ट कंपोनेंट कौन अच्छी ना सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर। सेकेंड रे कौन अच्छी ना फैक्ट्स और कंस्टेंट। थर्ड पॉइंट वी शुड फोकस ऑन stakeholder। फोर्थ रे में ethical issues और वैल्यू सिस्टम कौन कौन इन्वॉल्व अच्छी वैल्यू सिस्टम कौन कौन इन्वॉल्व अच्छी से पॉइंट ऊपर हमें डिस्कशन करवा, ओके। तो यूजुअली मु तुम मानक आज गोटे बहुत भल फॉर्मेट कहबी। तो वीडियो यूजुअली टिके लंबा मध्ये ही पारे किंतु ए गोटिए वीडियो रु तम माने कंप्लीट सॉल्यूशन वन स्टॉप सॉल्यूशन तमे माने पाई परियो, ओके। देखिबा वर्तमान केमिति भाबरे वर्तमान हमें गोटे अप्रोच वर्तमान नबा। देखो सिंपल पॉइंट वर्तमान हमर कोन रहिबा दरकार ना केस स्टडी रे प्रथम कथा हमें हाईलाइट करबा दरकार कि इंट्रोडक्शन पार्ट हम मानकर कोन रहिबो। इंट्रोडक्शन पार्ट सो प्रथम पार्ट रे कौन रहिबो ना इंट्रोडक्शन पार्ट रहिबो, ओके। इंट्रोडक्शन पार्ट परे बॉडी पार्ट पे जो ब्रीजिंग लाइन अछि जो ब्रीजिंग गैप टा रहउछि से ब्रीजिंग गैप टा वर्तमान हमको फिल करिया पे पड़ियो। दैट इज अ ब्रीजिंग गैप, दैट इज द ब्रीज बिटवीन व्हाट इंट्रोडक्शन एंड बॉडी। देन एई बॉडी रे कौन करिया दरकार ना हमें क्वेश्चन को एड्रेस करिया दरकार। क्वेश्चन को वर्तमान कौन करिबा ना एड्रेस करिबा बॉडी पार्ट रे। बट ब्रीजिंग पार्ट ता कौन करिवो ना इंट्रोडक्शन पार्ट और बॉडी पार्ट को कौन करिवो ना कनेक्ट करिवो, ओके। ए जो कनेक्टिंग पैरामीटर अछि से कनेक्टिंग पैरामीटर कौन जो तुमको 5टा पॉइंट कहली। प्रथम कथा हो सब्जेक्ट मैटर, द्वितीय रे हमें जिबा कंस्ट्रेंट, तृतीय रे जिबा स्टेक होल्डर, चतुर्थ रे हमें जिबा एथिकल इशू बा को वैल्यू सिस्टम इन्वॉल्व अछि ए एथिक्स रो केस स्टडी ऊपर। तो आसंतु सब पॉइंट रो वर्तमान डिस्कशन करबा आ सब 5टा पैरामीटर को केमति भाव रे हमें बॉडी पार्ट रे ब्रीजिंग करबा से पॉइंट को मध्ये हमें आखि आगे रखिबा। ओके। सो वर्तमान हमें इंट्रोडक्शन केमिति भाव रे लिखिबा। जेकोसी केस स्टडी इंट्रोडक्शन लिखा हेले प्रथम तुम कौन कर केस स्टडी
सब्जेक्ट मैटर को धरिबो कोन अछि वर्तमान सब्जेक्ट मैटर मु फर्स्ट पॉइंट कोन कहि दिल तुम मानकू ना वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट मैटर ओके एई सब्जेक्ट मैटर को नै वर्तमान हमें कोन करबा ना इंट्रोडक्शन लिखिबा सब्जेक्ट मैटर केमिति फाइंड आउट करा जाय ना young social activist has become very popular within a short period of 5 years because of his honesty integrity and human values he finds rampant corruption so that means एठी rampant corruption कोन अछि ना तमरा सब्जेक्ट मैटर अछि त कोन लिखिबा हम इंट्रोडक्शन ना the above case study the above case study highlighted the situations highlighted the situations about कौन ना loss of ethical values and absence of कौन probity in governance by what rampant corruptions okay then तामाने कोन इंट्रोडक्शन एमिति भाव में लिखिबा दरकार जेमिति कंप्लीटली से केस स्टडी टाको हाईलाइट करथबा दरकार जेहेतु एठी रैम्पार्ट करप्शन गोटे कीवर्ड देला जेहेतु हमें पढी जंती विभिन्न प्रकार थियोरेटिकल सब्जेक्ट एथिक्स केस स्टडी रे एथिक्स रो जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट हला एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस एटीट्यूड एप्टीट्यूड सिविल सर्विस फाउंडेशनल वैल्यू एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओके प्रोबिटी इन गवर्नेंस तेनु करप्शन ता कोन ना एब्सेंस ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस को दर्शाउछि तेनु जदि हमें गोटे वर्ड हमें जदि लिखि देबा एब्सेंस ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस जोटे के हाईलाइट करूछि कोन एवं कॉज मध्य करूछि त माने एब्सेंस of probity in governance ता गोटे cause effect तार कोन ना इफेक्ट होची rampart of the corruption then so that should be the introduction clear second part रे हमें जिबा कोन ना क्वेश्चन को जिबा पूर्व मु जो कहिथिल तुमु स्केलेटन दरकार माने क्वेश्चन को एनालाइज करिया पई हमें गोटे कोन करबा ना फ्रेमवर्क टे बनेबा से फ्रेमवर्क ता कहा का ऊपर डिपेंडेंट होची ना अगेन मु तो मानु कहूची मन रखि कि ध्यान दे कि सुनो बिकॉज़ एटा बहुत इंपोर्टेंट ए जिंसटा तुमको एनालाइज करबो गोटे डिटेल इंफॉर्मेशन दबो कोन ना क्वेश्चन को एड्रेस करिया पई प्रथम कोन सब्जेक्ट मैटर सेकंड रे कोन कांस्टेंट बा फैक्ट थर्ड रे कोन स्टेक होल्डर फोर्थ रे कोन एथिकल इश्यूज बा जहां भी किछि वैल्यू सिस्टम इन्वॉल्व अछि केस स्टडी रे ठीक अछि तो वर्तमान हमें जिबा कोन गोटे ब्रिजिंग पॉइंट को जिबा तो ई 4-5 टा पैरामीटर को हम वर्तमान एड्रेस करबा ठीक अछि डन सो वर्तमान आसो सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ले वर्तमान मु तुमको इंट्रोडक्शन लिखे देली देन सो वर्तमान जो सेकंड पॉइंट रे जो पांचटा पैरामीटर को कोन करबो ना गोटे बॉक्स एमती भाबरे जस्ट यू टू मेड ए बॉक्स देन बॉक्स रो प्रथम पैराग्राफ रे लिखिबो कोन ना सब्जेक्ट मैटर देन देखो कोरिलेशन केमती भाबरे इंट्रोडक्शन और बॉडी रो जो ब्रिजिंग पॉइंट रे मध्ये कोरिलेशन रहबा दरकार ता माने हमें गोटे एसेंस बाहर करबा गोटे क्रोनोलॉजी बाहर करबा जेमती गोटे पूरा गोटे फ्लो जेमती भाबरे आंसर राइटिंग रे रहबा दरकार त सब्जेक्ट मैटर हमें कोन करले ओथि पई ए जो केस ता बा ए जो सॉल्यूशन ता हमें आनिबा केस स्टडी रो सॉल्यूशन आनिबा ना सब्जेक्ट मैटर थिला कोन भाई ना करप्शन थिला त सब्जेक्ट मैटर आखि बुझे लिखि देबो कोन ना करप्शन आउ किछि लिखिबार किछि आवश्यकता मध्ये नै डन सो देन आसे कोन ना देन सेकंड पॉइंट रे हमें वर्तन आसीबा कोन ना फैक्ट कोन अछि फैक्ट्स और कांस्टेंट कोन अछि ओके फैक्ट और कांस्टेंट रो अर्थ कोन वर्तमान में बुझिबा कांस्टेंट अर्थ कोन ना यूजुअली जदी हमें देखिबा कांस्टेंट ता गोटे बहुत भलो लैंग्वेज जोटे कि यूजुअली साइंस रे यूज हुए फिजिक्स रे बेसिकली यूज हुए कांस्टेंट माने कोन इश्यूज बा प्रॉब्लम ओडिया रे जदी हमें कहिबा को फैक्टर को सिचुएशन इन्वॉल्व रहउची कोन करिया पई ना ए सिचुएशन टा को एराइज करिया पई सेटा को हमें साधारणतः कोन कहिबा ना फैक्ट बा कांस्टेंट बोली वर्तमान हमें कहिबा तो एटी कांस्टेंट कोन फैक्ट वर्तमान कोन ना फैक्ट होची कोन ना
करप्शन तो होउची करप्शन हला परे करप्शन कोन पई होउची सेटा होउची हमर फैक्ट करप्शन कोन पई ना इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आउ के रहिले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देन आउ के रहिले इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट गवर्नमेंट ऑफिसर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ता सहित तमरो लोकल मीडिया आल्सो देन सो कंस्टेंट अर्थ कोन ना इन्वॉल्वमेंट एई मानकर सहयोग रे कोन होउची ना रामपाट करप्शन होउची तेनो एई मानकर सहयोगटा कारण जो माने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंतु गवर्नमेंट ऑफिशियल होंतु एमाने कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी अछि कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यू सिस्टम अछि गवर्नेंस रो जो एसेंस अछि एई मानक हाथ रे ही गवर्नेंस रो एसेंस अछि एई मानक हाथ रे ही कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करिया पय जो कैपेबिलिटी एमानक भी जनता दैछंती बा गवर्नमेंट एमानक दैछि किंतु एमाने कोन करूछंती ना से जिंस न करी इन्वॉल्व रहउछंती कोन को जिंस रे ना करप्शन रे इन्वॉल्व रहउछंती व्हिच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो सेहि पय कोन होउछि ना एई प्रकार विभिन्न प्रकार रो प्रॉब्लम बा असुविधा क्रिएट होउछि क्लियर हला तो मु आशा करूछि तो माने बुझि परथियो फैक्ट ऑफ कांस्टेंट रो अर्थ कोन थर्ड पॉइंट रे वर्तमान हमें आसीबा कोन ना स्टेक होल्डर्स ओके स्टेक होल्डर्स वर्तमान केमिति होबर तमे फाइंड आउट करबो देखो तो वर्तमान जो केस स्टडी रे तमर थिला कोन आउ थरे मु तम केस स्टडी ता भल भाबरे बुझै दउची कहि दउची केस स्टडी ता कहा ऊपर थिला ना गोटे यंग सोशल एक्टिविस्ट जे जणा सुना अछि कोन पय ना ता भितर जेतु ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ह्यूमन वैल्यू सिस्टम बहुत भल भाबरे अछि लोकटा ऑनेस्ट लोक बोली समस्त जानि छन तांकर से लोकल एरिया रे मध्ये समस्त जानि छन किंतु से वर्तमान जानिया पय चाहिला कोन ना किछि गोटे गवर्नमेंट स्कीम रे कोन हेछि ना करप्शन हेछि देन थर्ड रे कोन अछि ना लोक माने एतले साइलेंटली प्रोटेस्ट मध्ये करूछंती पीसफुली मध्ये प्रोटेस्ट करूछंती वर्तमान केही मध्ये से सिचुएशन ला सॉल्यूशन बाहर करि पारु नाहंती आ एई कोर्स ऑफ एक्शन एई सिचुएशन ले एई प्रॉब्लम रे एई जो यंग एक्टिविस्ट अछि तार कोर्स ऑफ एक्शन ता कोन होबा दरकार त स्टेक होल्डर वर्तमान किए स्टेक होल्डर अर्थ कोन ना जे गोटे स्टेक को होल्ड करिवो स्टेक रो अर्थ कोन ना स्टेक किछि भी पारे स्टेक गोटे गवर्नमेंट मध्ये ही पारे स्टेक गोटे समाज मध्ये ही पारे स्टेक गोटे एनजीओ ही पारे तो सब जिंस को जे गोटे गोटे कंपोनेंट को होल्ड करिवो ताको हमें कोन कहि परिबा कोन कहबा ना स्टेक होल्डर बोली कहबा तो स्टेक होल्डर की अछि ना प्रथम होछि यंग एक्टिविस्ट ओके सेकंड रे की ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स elected representatives then four रे कोन मीडिया फिफ्थ रे किए ना फिफ्थ रे होचंती सोसाइटी एट लार्ज देखो साधारणतः तो वर्तमान तुम मानक भीतर क्वेश्चन आसी पारे कि डाउट मध्ये क्लियर हे माने डाउट मध्ये एराइज हे पारे कि सर एठी त आपण गवर्नमेंट ऑफिसर लिखिसंती एठी मध्ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिखिसंती एठी मध्ये लोकल मीडिया लिखिसंती देन पूणी कोन पय आपण स्टेक होल्डर एठी गवर्नमेंट ऑफिसर लिखिले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिखिले मीडिया लिखिले सोसाइटी एट लार्ज लिखिले तो ए दिटा जिंस कॉमन बोली लागु थई पारे किंतु एक्चुअली ए जिंसटा कॉमन न काहे कि ना एठी मु यूज कोन करछि गोटे वर्ड ना इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कारण एमानकर जो एसेंस थिला एमानकर जो एथोस सेटा काहा अगेंस्ट जाउछि ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एथिकल गवर्नेंस प्रोबिट इन गवर्नेंस अगेंस्ट जाउछि एमानकर इन्वॉल्वमेंट कोन करूछि ना क्रिएट करूछि कोन क्रिएट करूछि ना करप्शन क्रिएट करूछि सोसाइटी रे सेहिति पे एटा कोन कुआ गला ना फैक्ट ऑफ कांस्टेंट बोली कुहा गला किंतु हां एक कथा मध्य होई परिबो एमानकु स्टेक होल्डर मु कोन पई रखिली भाई स्टेक जदी समाज को गोटे मु नेबी स्टेक अनुसार तो समाज को होल्डिंग करिवार कैपेसिटी मध्ये यंग एक्टिविस्ट पाखरे अछि गवर्नमेंट ऑफिशियल ऊपर मध्ये अछि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पाखरे मध्ये अछि मीडिया रे अछि सोसाइटी एट लार्ज रे मध्ये अछि ता माने कोन ना कंप्लीट समाज रो एमाने गोटे गोटे पार्ट ता माने एमाने समाज को रिप्रेजेंट करूछंती किंतु जतबेले समाने गोटे माइक्रोस्कोपिकल लेवल को पळि आसुछंती इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव तले समाने निजर पर्सनल ग्रोथ कथा चिंता करूछंती सेतबेले कोन हे होछि ना से पर्सनल ग्रोथ VS सोसाइटल ग्रोथ क्रिएट कोन करूछि ना समाज पई गोटे बहुत बड़ एंगल क्रिएट करूछि जो एंगल ता कोन
आणुछि ना करप्शन भलिया गोटे सिचुएशन मध्ये क्रिएट करि पारुछि क्लियर हला घटना आई होप वर्तमान तमे सब्जेक्ट मैटर फाइंड आउट करि पारला फैक्ट फाइंड आउट करि पारला आ स्टेक होल्डर मध्ये फाइंड आउट करि पारला तीनटा कांसेप्ट भलो भाबरे तमे बुझि पारिला तो फोर्थ पॉइंट वर्तमान आमे जिबा फोर्थ पॉइंट रे वर्तमान कोन रहइबो ना कोन कोन एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व अछि एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व को आमे मध्ये दि भाग रे विभक्त करि परिया प्रथमे आमे कोन करिबा ना इन्वॉल्व वैल्यू सिस्टम ओके 5 नंबर पॉइंट दबा कोन ना एथिकल इश्यू कोन रहुछि डन सो इन्वॉल्व वैल्यू सिस्टम वर्तन कोन कोन आमे देखिबा तो मतलब लागुछि वर्तन ए जिंसटा जदी तम मानगो केस स्टडी वर्तन मु देखिबे आउ टिके तम माने भलो भाबरे बुझि परियो बट आई होप 1 2 3 कांसेप्ट जो स्टेक होल्डर पर्यंत तम माने बुझि परिछ तो आसा वर्तन 4 नंबर और 5 नंबर पॉइंट वर्तन हम डिस्कशन करबा इन्वॉल्व स्टेक होल्डर कोन एथिकल इश्यूज कोन ओके देखो वर्तन इन्वॉल्व इश्यू सॉरी इन्वॉल्व वैल्यू सिस्टम वर्तन कोन केमिति भाबरे हमें केस स्टडी मध्ये आको हमें फाइंड आउट करबा कोन ना ए यंग सोशल एक्टिविस्ट हैज बिकम वेरी पॉपुलर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी गोटे वैल्यू सिस्टम इंटीग्रिटी गोटे वैल्यू सिस्टम ह्यूमन वैल्यू मध्ये गोटे मनुष्य भीतर कोन कोन यूनिवर्सल वैल्यू रही परियो जेमति हमें कहि परिबा सिंपैथी हला एम्पैथी हला कंपैशन हला ऑब्जेक्टिविटी हला तुम ए सब जिंस गोटे ह्यूमन वैल्यू भीतर जीवो आ तुम ह्यूमन वैल्यू मध्ये पढी जो भी भलो भाबरे एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस ethics in human interface रे chapter 1 of ethics रे जो हमर अछि ethics integrity aptitude जो chapter 1 अछि chapter 1 रे तम माने एटा भलो भाबरे पढिथियो सो इन्वॉल्व वैल्यू वर्तन पॉइंट देख लेखो ऑनेस्टी द्वितीय रे होछि कोन इंटीग्रिटी थर्ड पॉइंट इज व्हाट ह्यूमन फोर्थ पॉइंट रे हमें कोठी कि जिबा ना probity in governance okay probity in governance so that is the involved value system so now we have to find out ethical issues कोन अछि ethical issues वर्तन फाइंड आउट केमति करा जाय से पॉइंट को मध्ये डिस्कशन हम करबा यूजुअली देखो एथिक्स रा अर्थ कोन एथिक्स होछ गोटे स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल जोटा आइदर एटा सोसाइटी द्वारा मध्ये प्रणोदित हे पारे आइदर एटा कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा मध्ये प्रणोदित हे पारे नहले गोटे बिजनेस मॉडल बिजनेस रो किछि एसेंस द्वारा मध्ये प्रणोदित हे पारे तो एथिक्स ता हम कहबा कोन गोटे स्टैंडर्ड प्रिंसिपल जोटा हम डिफाइन करबो व्हिच थिंग इज राइट एंड व्हिच थिंग इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम तनो जदी विथ रिस्पेक्ट टू सिचुएशन आउ समय अनुसार आउ से समाज रो जहा किछि स्टैंडर्ड प्रिंसिपल अछि ता अगेंस्ट जदी हमो किछि जिंस आखि आगु को आसु ता हमें कोन कहि परिबा ना सेही जिंस को हमें कोन कहि परिबा ना एथिकल डिलेमा बोली कहि परिबा सो दैट्स मींस वर्तन एथिकल इश्यूज रो वर्तन फाइंड आउट करबा एठी एथिकल इश्यूज कोन देखन एई केस स्टडी रे जोठी जने यंग एक्टिविस्ट वर्तन कोन करूछ ना समाज रो मंगल कथा चिंता करूछ बट इन सेम केस रे वर्तन कोन करूछ ना किछि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किछि कॉन्ट्रैक्टर किछि ब्यूरोक्रेटिक लोक वर्तन कोन करूछ ना रैम्पैंट करप्शन रे नियोजित अछन ओके तनो एथिकल इश्यू हम एठी कोन कहि परिबा ना absence in probity in governance सेकंड कथा कोन अछि ना जो कॉन्स्टिट्यूशन को एमाने अपहोल्ड करूछन समाज को अपहोल्ड करूछन गवर्नमेंट रो जो गुड गवर्नेंस रो थीम को एमाने अपहोल्ड करबा कथा सेठी एमाने करूना जोठी हमें डेमोक्रेसी को भावंती गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ एठी कोन अछि ना गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ दाने कहबा अत्युक्ति हो नै एठी मीडिया वर्तन इन्वॉल्व अछि कोन करप्शन ठीक अछि तो हम एठी कोन कहि परिया ना absence in constitutional morality also then तेणु जो पांचटा पॉइंट मु आपण मानक सहित डिस्कशन कली से पांचटा पॉइंट गोटे बॉक्स आकार रे लिखिबो आउ ता पूर्व रे हम कोन लिखा दरकार ना इंट्रोडक्शन लिखा दरकार तो एटा हो जे गोटे
स्कीमेटिक स्केलेटन डायग्राम कर देली बा गोटे स्कीमेटिक वर्तन तुम मानू दर्शई देली जो स्कीमेटिक अनुसार वर्तन में अप्रोच करबा कोठी की ना क्वेश्चन को वर्तन में अप्रोच करबा तो अगेन समरी इन समरी रे वर्तन तुम मानू कहबा को चाहे केमिति वर्तन फ्रेम आउट करिवो से फ्रेम आउट ता मध्ये लिखि रखो प्रथम पॉइंट कौन ना इंट्रोडक्शन लिखिल इंट्रोडक्शन लिख सारा पर कौन करिवो ना गोटे बॉक्स बनैबो सब्जेक्ट मैटर वर्तन डिफाइन कलो सब्जेक्ट मैटर वर्तन डिफाइन कलो ओके सेकंड पॉइंट वर्तन कौन करिवो ना फैक्ट और कांस्टेंट डिफाइन कलो फैक्ट और कांस्टेंट डिफाइन कलो ठीक अछि थर्ड पॉइंट रे कौन डिफाइन कलो ना स्टेक होल्डर देन एवं फोर्थ पॉइंट रे में डिफाइन करबा वैल्यू सिस्टम और एथिकल इश्यूज देन तो वर्तमान ए अनुसार वर्तमान हमें कौन कले ना इंट्रोडक्शन लिखिले एवं ब्रीजिंग वर्तमान फुलफिल कले कहा भितरे ना बॉडी पार्ट भितरे और इंट्रोडक्शन पार्ट भितरे ठीक अछि तबे हमें सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को जिबा जोटी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रे कौन अछि ना व्हाट स्टेप्स एंड एक्शन ही शुड टेक टू हैंडल द सिचुएशंस ता माने नो डाउट इट इज अ कंप्लीट क्वेश्चन बट सही कंप्लीट क्वेश्चन ले दीटा पार्ट रहबो ता माने हमें क्वेश्चन को पहुंचीबा गोटे थ्रो रे सही थ्रो रे हमें पहुंचले जा तुमको बर्तन बुझेली सेकंड पार्ट रे बर्तन कोन करबा ना क्वेश्चन को हमें बर्तन एनालाइज करबा क्लियर अछि देन सो सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन आवर बर्तन कोन रहबो ना okay so again also I am telling to you first you have to make what first you have to make the introduction and the bridging part should contain the 5 components first one is what subject matter second one is what constant third one stakeholder fourth one is ethical issues and the what are the values involved in the case studies okay so now come to the question what is the question what steps and action he should take to handle the situations examine the various options first I will recommend you so you have to write the options okay if you write the options तापर तमे कोन करि परियो ना तमे स्टेप को भलो भाबरे डिफाइन करि परियो examine the various option means what examine means what तमे examine करिवो परीक्षा करिवो को जिंसटा तम भाई केते दूर ठीक आ को जिंसटा केते दूर तम भाई भूल अछि को ऑप्शन ना तो वर्तमान आसा ऑप्शन 1 ने वर्तमान कोन हेई पारे एग्जामिन अर्थ कोन ना ऑप्शन 1 रो मु कोन लिखबी ना मेरिट कोन लिखबी आउ डिमेरिट्स कोन लिखबी डन तो प्रथम कथा देखो एज अ यंग एक्टिविस्ट सोशल एक्टिविस्ट मु मध्ये साइलेंट मध्ये रहि परिबी किछ प्रॉब्लम नै सिचुएशन देखली लोक माने मते आसी मध्ये कहउछन गोटे जो कोनदिनी चलता है एटीट्यूड ठीक अछि भाई से तो ता बाटे चलछि मोर तो रेपुटेशन भल भाबरे अछि मु एठी एते कथा जानिलिनी एते कांस्टेंट मध्ये अछि एते सिचुएशंस मध्ये अछि काहे कि मु जीवी हां आ गोटे कथा मध्ये तुम कहूची मु जिनछडा देखो ए क्वेश्चन को तमे आसिया पूर्वरु तेठी गोटे पॉइंट लिखि सारला परे तमे आसीबो ऑप्शन कोन लिखिबो ना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस according to the situations the following options can be taken within the boundary of above constraint then above constraint ए लाइन ता लिखिबा निहाती दरकार तापर तमे आसीबो को कहा पाखु ना ऑप्शन पाखु आसीबो काहे कि ना मु आउ धरे मध्ये तम मानु कहूची जहा सिचुएशन अछि जहा कंडीशन अछि सेही कंडीशन रे सेही सिचुएशन ले कोन अछि ना कांस्टेंट जहा किछ असुविधा अछि सेही प्रॉब्लम को नै सेही इश्यू को नै तमे कोन करिवो ना भाई ऑप्शन बर्तन तम पाखु आसीबा दरकार प्रथम कथा मु एई अनुसार भाबिली कोन ना जदी एज ए यंग एक्टिविस्ट अनुसार मु कोन करिवि ना सिचुएशन देखिली विभिन्न प्रकार कांस्टेंट मध्ये देखिली तो प्रथम ऑप्शन निहात भर मु माइंड को आसीबो कोन ना मु साइलेंट रहि छी देखिबा साइलेंट रहले कोन होउची देखिबा
that should be the option 1, remain silent. Usually 90% लोक माने मते silent रुहन, it's true. तो जदि मु silent रहिली ताले मोर merit कोन demerit कोन, डन. तो option 1 रो option 1 कोन ना remain silent, remain silent. Silent रहिले बर्तन merit बर्तन कोन पाइबी, demerit बर्तन कोन पाइबी. हो merit means what, कोन benefit पाइबी, कोन benefit हबो जेहेतु मु ऑलरेडी गोटे यंग एक्टिविस्ट अछि, लोक माने मते जानि छथि को अनुसार जानि छथि. क्वेश्चन देखो लोक माने जानि छथि कोन ना भाई मु ऑनेस्टी अछि, इंटीग्रिटी अछि, तेनु सेही जो वैल्यू सिस्टम ना मोर कोन हबो अपहोल्ड हेकि रहिबो. ओके, सो दैट मींस मेरिट कोन हबो ना अपहोल्ड माय वैल्यू सिस्टम, अपहोल्ड माय, अपहोल्ड और प्रिजर्व मध्ये लिखि परिबो, अपहोल्ड और प्रिजर्व मध्ये लिखि परिबो, अपहोल्ड और प्रिजर्व मध्ये लिखि परिबो. प्रिजर्व माय वैल्यू सिस्टम, देन आउ कोन मेरिट रहि परिबो जेहेतु तमे कोनो इमोरल काम करिवो नाही, एटा जेतु गोटे मोरल ग्राउंड रे जाउछि त गोटे भलो कन्साइन मध्ये, ग्रेटर कन्साइन मध्ये, कन्साइन ले मध्ये एक्सपेंशन हे जो गोटे मोराली मध्ये तमे सैटिस्फाइड हबो. ओके, सो दैट्स मींस मेरिट आउ मध्ये कोन हबो मोराली आल्सो यू कैन सैटिस्फाइड, मोराली सैटिस्फैक्शन. Then but what is the demerit, what is the demerit, demerit कोन हे परिबो जदि तमे साइलेंट रहिलो. what should be the demerit, बोलो demerit कोन कोन हे पारे जदि if you are remain silent on the situations. प्रथम कथा मोरल क्राइसिस गोटे बहुत बड़ कथा, मोरल क्राइसिस, मोरल क्राइसिस. एंड सेकंड पॉइंट मध्ये कोन रहइबो ना वैल्यू सिस्टम रा मध्ये डिग्रेडेशन हबो, जेतु तमे ऑलरेडी जाना जाय छ कोन जने ऑनेस्ट एक्टिविस्ट अनुसार वैल्यू सिस्टम रा मध्ये डिग्रेडेशन हबो. ओके, वैल्यू सिस्टम डिग्रेडेड, degraded. Done. So that is the option 1. Clear? So now come to the option 2. What should be the option 2? Bolo. What should be the option 2? What should be the option 2? ना तमे कोन करिवो ना जेतु विलेजर माने तम पाखु आसिले, then you can blindly follow the villagers. Okay, so then you can write also young activist which blindly, young activist will blindly open, will blindly open his voice along the villagers. Then so what is the merit? So now come to the option 2. Option 2 रे कोन अछि ना young activist will blindly open his voice along with the villagers. तो merit वर्तन कोन रहि परियो ना merit वर्तन हबो कोन ना लोक मानकर जो वैल्यू सिस्टम अछि बा जो भरोसाटा अछि, ट्रस्ट जो अछि सेटा कोन हबो रीजनरेट मध्ये हबो. सेकंड रे कथा अपहोल्ड मध्ये रहिबो, से ट्रस्ट अपहोल्ड मध्ये रहिबो. ओके, सो दैट्स मींस ट्रस्ट गोटे जिंस अपहोल्ड हेक रहिला. ओके, सेकंड जिंस मध्ये कोन ना विलेजर्स मध्ये सैटिस्फाइड रहिबे, कारण जेहेतु से माने गोटे ऑलरेडी ए जो क्राइसिस थिला से क्राइसिस पे से माने विलेजर्स माने लढुतले. आ जने गोटे तमे जेते यंग एक्टिविस्ट अछ, तमर जेतु ना ऑलरेडी अछि, तम ऑलरेडी पॉपुलर अछ, तम माने जेते ताकू सहयोग करिवो, तो विलेजर्स मान को मध्ये गोटे मोराली सैटिस्फैक्शन लागियो, आ तुम मान को मध्ये गोटे मोरल सैटिस्फैक्शन लागियो. ओके, so that means moral satisfaction by villagers, moral satisfaction by villagers. Done. And also you self morally satisfied मध्ये तमे रहइबो. Then that is the thing. But what is the demerit here?
व्हाट इज द डिमेरिट हियर प्रथम कथा हेठी तुम मानू जानिया पई पड़िबो विलेजर्स माने तुम पाखु आसिले कोन पई जेहेतु केस टा टिके बहुत भलो एंगल को मध्य जीवा लोक माने मध्य जानि परिबे कि ठीक अछि केस रो एसेंस केते अछि आ केस रो डीपनेस केते अछि प्रथम डिमेरिट किंतु कोन हे परिबो ना जेहेतु ब्यूरोक्रेट्स माने मध्य एथि नियोजित अछंती कहि दिल तो मानू प्रथम कांस्टेंट को मन पकेबो कोन अछि कारण डिमेरिट जदि तुम फाइंड आउट करियो प्रथम गोटे होछि एंगल होछि कांस्टेंट को मन पकेबो निजे मने मने कोन से डिमेरिट्स लिखिबो डिमेरिट्स ता काहा ऊपर बेस रहबा दरकार ना कांस्टेंट ऊपर बेस रहबा दरकार ओके तेणु प्रथम कथा कौन अच्छी ना ये ब्यूरोक्रेटिक मैंने अच्छा इनवॉल्वमेंट देन रे कौन अच्छी मीडिया मध्य इनवॉल्वमेंट अच्छा तो गोटे बहुत बड़ नेक्सस होची एटी अछि नेक्सस अछि जो जिनसा मध्य कौन करि पारे ना तम जीवन ऊपर मध्य विपद भोगी पारे प्रथम जिनसा कौन ना इट इज हार्म टू योर लाइफ कॉमा देन तमरो इट आल्सो hamper your family life hamper your फैमिली लाइफ डन सो दैट इज द डिमेरिट ओके आउ मध्य कोन कोन डिमेरिट मध्य हे परियो जेतु मीडिया माने मध्य अछंती तनो जो सेक्शन ला मीडिया धरो एई जिंस रे नियोजित अछि से मध्य जेतु तमर गोटे पॉपुलैरिटी अछि से मध्य तम पॉपुलैरिटी से मध्य कोन करि पारे खेली पारे मध्य से तम पॉपुलैरिटी को मध्य रुइन करि पारे सो इट कैन आल्सो ruin your popularity by publishing the fake information by media house done by media house तामाने देखो सिचुएशन एटी कोन हे जबो जदी मीडिया एटी कंप्लीटली इन्वॉल्व हे गेला तुमको बदनाम करिया पई जदी एटी कंप्लीटली मीडिया इन्वॉल्व हे गेला तनो तमे एटी कोन करि परिबो ना जहा किछि आगु कहिबार अछि जो स्टेप नबो जो मुद्दा तमे उठे वर्तन से मुद्दा को मने तमे ठीक भाबरे उठे परिबो नाही काहे कि ना टोटल कंप्लीट सोसाइटी रो मध्ये जो ट्रस्ट तुम ऊपर थिला से ट्रस्ट ता वर्तन भांगी जिवो डन सो एही प्रकार डिमेरिट वर्तन तमे ऑप्शन 2 रे मध्ये पाई परिबो तनो एही भली भाबरे हम ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 विभिन्न प्रकार ऑप्शन को हमें एनालाइज करूछंती तो विभिन्न प्रकार डिमेरिट मध्ये हम देखुछन तो हम वर्तन ऑप्शन 3 को जिबा ऑप्शन 3 कोन हे पारे देखिबा ऑप्शन 3 वर्तन कोन हे जो देखन ऑप्शन 3 को वर्तन जिबा पई हेले हमको वर्तन मेरिट रो जो जिंसटा को मेरिट वर्तन जति की बाहर करिवार अछि मेरिट रो एनालिसिस को हमें अधिक प्रायोरिटीज दबा डिमेरिट वर्तन कम खोजिया पई चेष्टा करिवा तनो सेही अनुसार वर्तन हमें कोन करिवा ना ऑप्शन 3 को डिजाइन करिवा ठीक अछि तो ऑप्शन 3 को वर्तन डिजाइन करिवा केमिति ना फॉलोइंग द कांस्टेंट ए कथा बारंबार को तुम मन को मन रखो कांस्टेंट कोन कोन अछि ना ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट सेकंड कांस्टेंट इज व्हाट मीडिया हाउस इन्वॉल्वमेंट थर्ड कांस्टेंट इज व्हाट local representatives are also involved okay so that means a option को वर्तन एनालाइज करिवा पई हेले ऑप्शन वर्तन कोन दबो ऑप्शन 3 रे दबो कोन स्ट्रेटेजिक प्लान करियो strategic plan to be needed so what should be this strategic plan so a strategic plan था से कांस्टेंट वर्तन बाहर करो जेमि वर्तन कोन कहली ना local media involved that means some section of the media they are involved so that means what कारण केस स्टडी देनी जे सब लोग सब मीडिया माने इन्वॉल्व अछन किछि गोटे स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द मीडिया इन्वॉल्व एई जिंसटा तो बाहर करिवार अछि ओके एटा होची जेनरिस ऑफ दिस केस स्टडीज ओके लोकल मीडिया जदी इन्वॉल्व अछन ताहले कोन अदर मीडियास दोज हु आर नॉट इन्वॉल्वड अदर मीडियास दोज आर not involved contact them then first thing is semanu contact kariyo okay so when they will come then तमे तांको पाखरे कोन करिया दरकार ना इंफॉर्मेशन ता प्रोड्यूस करियो से इंफॉर्मेशन ता केमिति आनिबो ना जो स्ट्रेटेजिक प्लान रो प्रथम जिंस कोन करिवो ना भाई थ्रू आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैला
2005 अनुसार राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट अनुसार बर्तन कौन हम ना तुम फाइल गोटे पिटिशन कल से अनुसार जहाँ भी किसी करप्शन जो केसेस रही जो गवर्नमेंट स्कीम अनुसार कंप्लीटली आरटीआई फाइल बर्तन तुम कौन कर मगेल मगई सारा गोटे इनफॉरमेशन जो तुम गैदर कल से इनफॉरमेशन को बर्तन कौन कर ना हाइलाइट कर क्या थ्रो रे ना अदर मीडिया थ्रो रे अदर मीडिया सहित जेहेतु वर्तमान जमाना बहुत गोटे सोशल मीडिया गवर्नेंस जमाना कहले आम अत्युक्ति हेनी तेणु बर्तमान आम फेसबुक यूज कर व्हाट्सएप रे विभिन्न प्रकार ग्रुप तुम शेयर कर पारिबो। थर्ड कथा यू कैन आल्सो ट्वीट कर पारिबो अथॉरिटी को सपोज यू वांट टू डन सो दैट इज ट्वीट आल्सो सो एक्स डन सो तमाने कोन वर्तमान सोशल मीडिया रे जो गलानी फेसबुक यूज कर पारिबो व्हाट्सएप यूज कर पारिबो सीएम को तुम ट्वीट कर पारिबो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट जो एजेंसी अछि रेस्पेक्ट गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट अछि ताको तुम ट्वीट कर पारिबो तेणु गोटे थ्रो जे तुम ट्वीट कर तो कौन हम ना मास मोबिलाइजेशन बर्तमान बढ़ियो अदर सेक्टर अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बर्तमान कौन हम ना तुम गोटे फ्लो आसीजो से तुमको सपोर्ट कर चलिए ये कौन हम ना तुम जो प्रीवियस ऑप्शन देती मेरिट एंड डिमेरिट जहाँ भी किसी देती प्रीवियस ऑप्शन रे ना ये तुम लाइफ थ्रेटनिंग आसो ना तुम पर्सनल फैमिली प्रोब्लेम फैमिली उपर किसी हाम्पर हबार आवश्यकता ना तेणु ये अनुसार आम गोटे बर्तमान कौन करवा ना स्ट्राटेजिकल प्लान करवा आरटीआई को बर्तमान आरटीआई थ्रो इनफॉरमेशन मगेवा सोशल मीडिया थ्रो बर्तमान आम कौन करवा जिनटा आम सोशलाइज करदे सो दैट कौन हम ना ठीक कौ जिनसा भूल कौ जिनसा भल भाव में जना पड़ ओके तो ऑप्शन 3 रे एई जिंस जदि मु कली मेरिट ताले कोन मोन बर्तन रहिबो देखियो मेरिट ना प्रथम मेरिट बर्तन कोन रहिबो ना सो दो आई नो वेरी पॉपुलर बिकॉज मु बहुत पॉपुलर हेछि कोन पई ना बहुत मोर ऑनेस्ट इंटीग्रिटी वैल्यू सिस्टम रहिछि तो अगेन बर्तन मु मध्य कहया पई चाहिबी कि कोन ना एथिक्स रे मध्य विभिन्न प्रकार पैरामीटर मध्य अछि जेमिति कहबी गोटे कोन यूटिलिटेरियन अप्रोच मध्य रहिछि डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स डिओन्टोलॉजिकल कांत एथिक्स जो रही है डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच जो डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच कौन बिलीव करे ना मोर पर्सनल मोरल सैटिस्फैक्शन जो काम करूँ से कहवा कौन डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स किंतु सही परिप्रेक्षित में समाज रे गोटे बहुत बड़ समाज रे गोटे जो बिगर यूनिट जब काम करूँ समाज भलरेबल सेक्शन सोसाइटी मान जब काम करूँ कौन ना यूटिलिटेरियन अप्रोच काम करूँ ओके तेणु प्रथम मेरिट कौन हम ना आई विल फॉलो द डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स I will follow the deontological ethics merit हो जारो सेकंड कौन also सोसाइटी जो मार्जिनलाइज सेक्शन जो सोसाइटी रो लोक माने अछंती से माने जो बहुत vulnerable सिचुएशन ले अछंती सेथि पय मध्य तुम माने गोटे ग्रेटर इंपैक्ट मध्य आनी परिबो also एटा मध्य फॉलो करिवो कोन it will also follow what follow the utilitarian approach of the ethics then ए केस रे बर्तन डिमेरिट कौन कौन आस परिबो डिमेरिट यूजुअली जदि हम देखिया मेरिट्स बेसिकली बहुत आसीबो डिमेरिट बहुत लेस मध्य बहुत कम डिमेरिट मध्य आसी पारे कारण जेतो हम एटे गोटे स्ट्रेटेजिकली बर्तन प्लान करिछन देन तो बर्तन एई प्रकार रो स्टेप हम नेबा मु जो बर्तन नर क्वेश्चन जहा देथिला क्वेश्चन अनुसार कौन थिला ना एग्जामिन्स द वेरियस ऑप्शंस ओके 1 मिनिट एग्जामिन द वेरियस ऑप्शंस तो बर्तन मु तमरो ऑप्शन उडा देखि देले ऑप्शन 1 2 3 आ ताको एग्जामिन कली को अनुसार ना एग्जामिन कली मेरिट्स आउ डिमेरिट्स अनुसार डन क्लियर सो नाउ वी हैव टू कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सो दैट इज व्हाट स्टेप्स एंड एक्शन यू शुड टेक टू हैंडल द सिचुएशन तो बर्तमान जो अनुसार मु ऑप्शन उडा लिखि जो अनुसार बर्तमान मु स्ट्रेटेजिकली प्लान करिछि तो सही अनुसार बर्तमान मु कोन करबी ना स्टेप एंड एक्शन बर्तमान नेबी को प्रिंसिपल फॉलो करबी ओके को फिलोसॉफी बर्तमान मु फॉलो करबी को जिंसरा बर्तमान को फिलोसॉफी को प्रिंसिपल बर्तमान मते मोटिवेट कला सिचुएशन टाको सॉर्ट आउट करिया पई से कोर्स ऑफ से स्टेप उडा बर्तमान मु लिखिबी तो देखो बर्तमान हेडिंग कोन दबो हेडिंग बर्तमान दियो कोन ना स्टेप्स ओके steps and action should be taken yes
So what is the step and action लिखि पारो what is the steps and action क्वेश्चन ले जहां से सही वर्डिंग ही रखो so that जेतबे जो कॉपी चेकिंग करूथो ता आखिरे जदी से वर्ड गुडा पूरा सिमिलरिटीज आसे ताल ताको दे भल लागियो वाला so steps and action okay steps and action done so बर्तन step and action ता कोठु नबो ना नबो ऑप्शन रो done ऑप्शन तमर को ऑप्शन ता सबुटु बेस्ट थिला ना ऑप्शन 3 होची बेस्ट थिला so then you can write also the option 3 and according to the option 3 you can take the steps done option 3 रो demerits usually बहुत negligible रहउछ so now we'll discuss the options 3 so what should be the option 3 just see here build a strong grassroots movement what is the need of build a strong grassroots movement because you know that because strong grassroots movement will create a good mass mobilization that is strong grassroots movement हो mass mobilization एत पे create हो काहे कि ना because the constant is what the top bureaucratic leaders media houses and local representatives they are involved with the corruption सेति पई जे तोर गोटे इनसिक्युरिटी आकु गोटे फील हे जिवो जे तो यार जीवन पई विपद अछि जार फैमिली पई विपद अछि सेति प्रथम दिन से कोन करिया दरकार ऑप्शन 3 रे निहात लोर से चूज करिवो कोन ना गोटे स्ट्रांग ग्रासरूट मूवमेंट वर्तन क्रिएट करिवे सेति पई से कोन करि परिवो ना ऑर्गेनाइज करिवो अवेयरनेस कैंपेनिंग कम्युनिटी मीटिंग करिवो लोकल लीडरशिप को मध्य ट्रेनिंग दबो एवं एम्पावर पीपल टू डिमांड द अकाउंटेबिलिटी so then come to the merit यार merit कोन रहइबो जदी grassroot movement जदी करे ताले broad united grassroot movement can exert significant pressure on authorities making it harder to ignore their demands it also strengthen his legitimacy as a respective of the people so that's means प्रथम कथा कहबा गले कोन होना accountability ता वर्तन बढ़िबो demerits kono na this could provoke backlash from the nexus so what is the meaning of backlash from the nexus ta mane जो nexus वर्तमान एई सिचुएशन को क्रिएट करि छथि जेमिति मु कहली मीडिया हाउस हला किछि लोकल रिप्रेजेंटेटिव हले किछि ब्यूरोक्रेटिक हले से माने मध्य बैकलेस हे पारे बैकलेस मध्य हे पारंती का ऊपर ना होछि यंग एक्टिविस्ट ऊपर जोटा कि मध्य विभिन्न प्रकार सिचुएशन मध्य क्रिएट करो दैट मे बी पर्सनल हे पारे किबा प्रोफेशनल सिचुएशन मध्य हे पारे डन so then come to the another point is what leverage digital platform and independent media so what is the need of this independent media because already in the constant I have mentioned what mention karichi na tamara some medias they involved in the corruption process so independent media ra आवश्यकता निश्चित भाव रे पई अछि आ से independent media कोन पई मध्ये यूज करिवो independent media कोन ना से सोशल मीडिया मध्ये यूज करि परिवो सिटीजन जर्नलिज्म मध्ये यूज करि परिवो independent outlets मध्ये बनै परिवो कोन पई ना पब्लिक मानकर ट्रस्ट आ पब्लिक मानकर होप जो अछि सेटा को रीजनरेट करिया पई ओके so what is the merit and what is the demerits देखो यदि डिजिटल सोशल मीडिया मध्ये से यूज करि पारे तो डिमेरिट्स से मध्ये आसी पारियो कोन से ऑनलाइन ट्रोलिंग मध्ये हे पारियो काहे कि ना जेतु किछि सोशल मीडिया मध्ये नेक्सस रे अछंती से माने एई जो यंग एक्टिविस्ट अछि यंग एक्टिविस्ट अगेंस्ट रे मध्ये किछि मिस इन्फॉर्मेशन मध्ये वाइड स्प्रेड करि पारंती मिस इन्फॉर्मेशन मध्ये स्प्रेड करि पारंती जो पे मध्ये से विभिन्न प्रकार ट्रोलिंग में मध्ये शिकार हे पारे बट मेरिट कोन मेरिट होछि कोन ना बाईपास ट्रेडिशनल मीडिया gatekeepers amplifies his message globally and could attract support from the activist NGO international watchdogs public exposure might pressure authorities to act यदि समस्त पाखरे पहुंचीबो टोटल सोसाइटी मध्ये जानि परिबो सो दैट गोटे वर्चुअल प्रेशर मध्ये क्रिएट हो का ऊपर ना रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऊपर मध्ये गोटे वर्चुअल प्रेशर क्रिएट हे पारे से मध्ये ए जो इन्वेस्टिगेशन ला भारत को विभिन्न प्रकार एंटी करप्शन एजेंसी को मध्ये देई पारे क्लियर हला नाइन इशू सो नाउ कम टू द अनदर ऑप्शंस देखो बहुत सारा ऑप्शन को 7 ରୁ 8 बेले ऑप्शन त मानन से डिस्कशन कर देउ जेतु हमर गोटे मोटिव कोन अछि ना आपण माने भलो भरे जानंतु कंप्रिहेंसिवली बुझंतु so that आपण माने 4-5 टा आपण टाइम कंज्यूमिंग अनुसार so you can also write in your examination clear so now come to the another option so another option कोन वर्तन अछि ना collect and present concrete evidence okay so वर्तन concrete evidence तमे केमिति पाई परियो ना concrete evidence थो RTA Act 2005 RTA Act 2005 अंडर रे तमे जे कोनोसी concrete evidence पाई परियो किंतु यार मेरिट और डिमेरिट कोन रही पारे डिमेरिट एई अनुसार हेई पारे जेहेतु
कॉन्स्टेंट को मध्य माने मने पकई पारो जेहेतु हमर किछि ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस आधार मध्य अछंती से माने मध्य कोन करि पारंती ना मैनिपुलेट मध्य करि पारंती आरटीआई डाटा को ये सन्नो so they can also manipulate the things. So but what is the merit? Na hard evidence strengthens his case and makes it harder for authorities to dismiss him. Legal action could be lead to investigation or policy changes. तेणु जब हमर गोटे भलो sophisticated data जदि हमको मिलिला ताले पॉजिटिवली हमको कोन करि परिबो ना गोटे भलो मेरिट देई परिबो हम लीगल सिस्टम रे मध्य जाई के मध्य केस को जीति परिबा क्लियर हला तेणु एपरि विभिन्न प्रकार ऑप्शन अछि आउरी मध्य बहुत सारा ऑप्शन मु लिखि छी देखो engage with anti-corruption institutions and allies. Okay, so anti-corruption agency जो तमर रहिला जेमिति हला सीबीआई हला ईडी हला तेनु ए प्रकार anti-corruption agency सहित मध्ये हम मानकर सहयोग रहिबा दरकार देखो approach national or international anti-corruption agencies NGO or ethical politician who might support his cause seek partnership with organization that have resources and expertise in fighting corruption. हां आ गोटे मध्ये मु कथा कहूची जदि भी जो माने विरोधी दल रे अछंती सपोज गवर्नमेंट बर्तन जो दल चलाउची आ ता अगेंस्ट मध्ये जो दल अछि सो तमे ग्रामवासी को नेकी विलेजर्स मान को नेकी मध्ये अपोजिशन लीडर को मध्ये देखा करि परिबो जदि सिचुएशन से ग्रेवनेस क्लास यू कैन आल्सो मीट टू द अपोजिशन लीडर सो दैट ए कथा को मध्ये से विधानसभा रे उठाइबो ओके तो एही अनुसार कोन हबो ना टोटल सब एडे गोटे इंफॉर्मेशन ता जीवो सो दैट कोन हबो ना गोटे तमे बेस सपोर्ट मध्ये पाई परिबो ओके तो एंटी करप्शन एजेंसी को जदि हमें कथाटा पकेबा नै किबा anti corruption agency सहायता जदि नबा so what should be the benefit just see here the benefit is what now external allies can provide legal financial moral support and increasing his leverage international attention might also pressure the government respond नियति भाबरे accumulation है जो pressure okay from the international as well as also national boundaries रो तमरा त accumulation हो pressure then you also get the moral support okay but risk कोन हबो now finding trustworthy allies is challenging and some institution may be slow ineffective over reliance on external help could undermine his grassroots credibility तनो एक कथा मध्ये तमे जानिया पे रहिबो जति कि भी हमर एंटी करप्शन एजेंसी अछि somehow से माने मध्ये जदि गवर्नमेंट रो प्रेशर रे मध्ये जदि किछि अनएथिकल वर्क मध्ये करि बसुंदी बट प्रोबेबली जदि हमें देखिबा इंटेंसिटी यूजुअली टिके कम हि क्लियर हला एनी प्रॉब्लम so now come to the another point pursue public interest litigation le kon achi if the legal system allows file a PIL in a higher court to demand accountability and reform in rural development schemes highlight how corruption violate the right of the people so that means PIL through ame kon kari pariba na direct we can also approach to the high court as well as supreme court amman को दर्शाय पे पडिबो केमिति भरे इशू टा vulnerable section of the society को केमिति भरे kon करूची ना hamper करूची okay so don't तापर बर्तन से बेनिफिट कोन बेनिफिट एई आसीबो ना कोर्ट केस कुड फोर्स सिस्टमैटिक चेंजेस एंड कंपेल द गवर्नमेंट टू वर्क इट आल्सो कीप्स द इशू इन द पब्लिक आईज निहत खबर बेनिफिट दबो बट सबुट बड़ डिमेरिट एक्चुअली कोन हो ना ई जिंसटा बहुत टाइम कंज्यूमिंग लागिबो त तमे कोर्ट को जीवो केस पर केस तारीख पे तारीख एई सब जिंस सिचुएशन ऑलरेडी यू नो दैट द इंडियन जुडिशियल सिस्टम तो सिचुएशन कोन हो ना भाई टाइम कंज्यूमिंग निहत खबर अब सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर ओके सो नाउ कम टू द now come to the another option is what run public office or support ethical candidate okay so what should be the action use his popularity to enter politics directly or beg honest candidates who shares his values aim to reform the system from within by gaining decision making power तार अर्थ कोन जो माने धरो ethical consideration जो मानन पाखरे अछि जो public officers अछन जो मानन पाखरे ethics और moral value रो कोन अछि माने presence अच्छी so that तुम्हें मध्य जाएंगे तांको मध्य डायरेक्ट अप्रोच करि परिबो so what is the benefit na political power could enable him to enact policies and dismantle the nexus his integrity could inspire voter turnout and what should be the risk the politics is resource intensive and risk he might face co-options threats or electrical manipulation his idealism could tested by the practical compromises done so now come to the another option organize economic pressure tactics so action should be what encourage boycotts of business tied to corrupt contractors or launch campaigning urging citizens to withhold taxes or fees linked to mismanagement schemes coordinate with affected communities to disrupt the nexus financial incentives so what should be the benefit economic pressure hits the nexus where it hurts most their profit it could force negotiation or concessions and what is the risk now, this could lead to legal repercussions
or violate crackdowns, it requires widespread coordination and risk alienating some supports. Okay, so educate and train public for long term challenges. तमे एभली विभिन्न प्रकार हमर कोन अछि ना ऑप्शंस अछि, देयर आर 7 to 8 ऑप्शंस. सो तमे किछि भी 3-4टा ऑप्शन मध्ये तमे लिखि परिबो. किंतु वर्तमान पॉइंट ऑफ डिस्कशन वर्तमान कोन आसले ना जो स्ट्रैटेजिक जो वर्तमान रिकमेंडेशन अछि, से स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन वर्तमान कोन हेई परिबो. डन. सो वर्तमान देखो स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन ले वर्तमान जीव तमरो तीन प्रकार स्ट्रैटेजी वर्तमान हमें नवा. गोटे कोन ना गोटे नवा हमें शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, okay, and another is what, mid term strategy, and another one is what, long term strategy. Clear हला घटना? Any problem? So now come to the short term strategy. हमें कौन कौन करि परिबा short term strategy रे कौन कौन करि हबो जो जिस हमें संगे संग करि परिबा जेमति डिजिटल मीडिया रे हमें यूज करि परिबा. So start with digital exposure and evidence collection to build momentum and credibility. Medium term रे हमें कौन करि परिबा ना file a PL and partner with allies to escalate pressure and seek synthetic. So that since medium term रे PL हमें दाखल करिबा कोर्ट को जदि हम बारंबार जिबा, it will take some time तो immediate action रे टिके नवा प्रॉब्लम हो. बट सोशल मीडिया रे वर्तमान जो जमाना अछि, तो सोशल मीडिया थ्रू रे जदि हम मास मोबिलाइजेशन करि परले समहाउ ये सिचुएशन ता मध्ये कोन करि परिबो ना सॉर्ट आउट मध्ये हेई पारे. ओके, सो देन लॉन्ग टर्म सिचुएशन कोन हेई परिबो, लॉन्ग टर्म गेन कोन हेई परिबो ना स्ट्रेंथन द ग्रासरूट मूवमेंट एंड परस्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस व्हाइल एजुकेटिंग द पब्लिक फॉर लास्टिंग चेंजेस. ता माने देखंतु लॉन्ग टर्म सिचुएशन कोन ना पब्लिक माने को मोटिवेट करबा. So that is one of the act also. So to motivate the public towards the issue of the corruption, that is why it is long term, because you know that the mass mobilization is something different thing. जेमिति भाबरे देश स्वाधीन हेतिला तो mass mobilization करिया पई प्रत्येक लोक को जागरित करिया पई हेले से एसेंस को धरिया पई पडियो, प्रत्येक लोकर माइंडसेट को जाई पढिबा को पडियो, प्रत्येक लोकर माइंडसेट पे पहुंचीबा पई पडियो. सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रे कोन हो ना कि प्रत्येक मास मोबिलाइजेशन ता ओके मास मोबिलाइजेशन ता कोन करबा ना टाइम टेकिंग नो. तेनु मास मोबिलाइजेशन ता इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. तेनु आमे कोन करबा ना ए तीनटा जंग प्रोसेस को करिया बट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम बी. डन. सो एई सब जिंस करबा करिला बेले मध्ये हमें आ को प्रति ध्यान देबा से कथाटा मध्ये हमें बुझबा दरकार ना बाय कंसीडरेशन कोन कोन हमें कंसीडरेशन नबा दरकार. देखो मु जहा तुम मानु कहि देली कांस्टेंट रो कथा माने पगेबो. कांस्टेंट जो थिला हमर पॉलिटिकल लीडर मानकर एसोसिएशन थिला, इन्वॉल्वमेंट थिला, ब्यूरोक्रेसी मानकर इन्वॉल्वमेंट थिला, ओके, लोकल मीडिया मानकर इन्वॉल्वमेंट थिला. सेति पे जस्ट वी हैव टू डू द सेफ्टी कोर्स को मध्ये हमें आखि आगरे रखिया मध्ये दरकार. सेफ्टी, अडैप्टेबिलिटी एज वेल एज आल्सो पेशेंस. सेफ्टी कोन द नेक्सस मे रिसोर्ट टू द थ्रेट्स और वायलेंस. कोनोसी कारण मध्ये वायलेंस क्रिएट हे पारे. सो ही शुड प्रायोरिटाइज हिज सिक्योरिटी and that his supporters possible seeking legal protection or public solidarity. Adaptability में कौन रखिया दरकार ना, if one tactic fails, protests are ignored, he must pivot quickly to another like legal action or economic pressure also. Patience मध्य रखिया दरकार because systematic corruption takes time to dismantle. He should prepare his followers for a prolonged struggle while celebrating small victories to maintain the moral. Okay, so that should be the key consideration, that should be the constant we should understand while also solving the case studies. Okay, so now come to the point. So now we have to write the conclusion. Okay, so there are various options, also we have examined also various options, and what should be the steps already we have discussed. So now come to the point of conclusion. Okay, so conclusion le kon likhiba darkar na, by blending immediate action with a vision for structural reform. So that should be remembered, by blending immediate action with a vision of structural reform. निहाती भाबरे आमे गोटे शॉर्ट टर्म गोल थ्रो रे सिचुएशन टा को सेट आउट करबा दरकार, बट यार लॉन्ग टर्म विजन रे आमे कोन करबा दरकार. लॉन्ग टर्म विजन आम भितरे ये रहबा दरकार कि कोन ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आसबा दरकार. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आसबा दरकार ता माने कोन ना कंप्लीट सोसाइटी रो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कोन ना कंप्लीट सोसाइटी रो स्ट्रक्चर रो चेंजेस रहिबा दरकार. ओके, सो the activist can maximize his impact while minimizing the burnout or retaliation. His honesty and integrity will remain his greatest asset, provided his
channels them into a clear actionable strategy. Okay, so at the last, in summarize way, just I want to tell you, so while you are writing any case studies, just you have to find out the subject matter, then find out the constant. Along with that, you have to find out the stakeholder and ethical issues and ethical dilemmas also, and make the introduction. Then you have to make the brief. In the brief, just you have to connect this introduction with respect to the body part, and you have to find out what the options, then you have to find out merits and demerits. Okay, so then you have to write out the conclusion. So according to that way, I hope you understand very well how to solve the case studies. Thank you so much.